Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe, Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaura Pimanandi, Jai Vishwapad Paramahamsa, Pre Vraj Gachadya Stotara Satya, Sri Simar, His Divine Grace,
Shri Bhai Charan Arvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Skandibiti Founder Charya Divine Grace Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Samagata Bhakta Vrinda ki Tiny type order Pinande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksuram Militam Jena Tasmai Sri Gurave Sri Chaitanya Manodistam Sapitam Jena Bhutta Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakambhitam Sya Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Rapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyayevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraya. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatu Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasya Namaha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Sarabhyay Namaha, Om Sarabhyay Namaha, Om Sarabhyay Namaha, Mukam karoti vachalam pangum langayate girim Yat kripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam Yat kripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Continuing from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, Chapter 2, Divinity and Divine Service. Text number 22. हम पढ़ रहे हैं भागवत स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 22। Ato Vai Kavayo Nityam Bhakt Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati Kurvanti Atma Prasadanim Atovai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati Kurvantyatma Prasadanim. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Certainly, therefore, since time immemorial, all transcendentalists have been rendering devotional service to Lord Sri Krishna, the personality of Godhead. अवश्य ही निश्चित ही इमेमोरियल टाइम मेमोरियल मतलब समय कितना समय से कह नहीं सकते, लेकिन इमेमोरियल का मतलब सनातन समय से हमेशा से लोगों ने ऋषियों ने भगवान की भक्ति की है. They have been rendering this devotional service to the Lord with great delight because such devotional service is enlivening to the self. और इस भक्ति को लोग बहुत ही मुदया मतलब बहुत ही आनंद से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भक्ति जो है करने में आदमी को जीवन दे देता है, एनलाइवनिंग होता है, जीवंत कर देता है व्यक्ति. Purport. The specialty of devotional service unto the personality of Godhead, Lord Sri Krishna, is specifically mentioned herein. यहाँ पे तात्पर्य में बताया जा रहा है, यहाँ पे भगवान के भक्ति की विशेष जो पहलू है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है, उसका कैसा होता है भक्ति. Lord Sri Krishna is the Swayam Rupa, personality of Godhead and all other forms of Godhead, beginning from Sri Baladev, Sankarsana, Vasudeva, Niruddha, Pradyumna, and Narayana, and ending to the Purusha avatar, Guna avatar, Lila avatar, Yoga avatar. That's quite a long sentence. And many other thousands of manifestations of the personality of Godhead are Lord Krishna's, Sri Krishna's plenary portions and integrated parts. भगवान कृष्ण जो है परम पुरुष हैं, और उनसे निकलने वाले जितने भी आपने नाम सुने, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, गुणावतार,
लीलावतार, उनके अंशावतार भगवान के अंश हैं या अंश के अंश हैं, उनके विस्तारित स्वरूप हैं सब। The living entities are separated parts and parcels of the personality of Godhead. जीव जो है भगवान का अलग हुआ, सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल, अलग हुआ अंश है जो। हाँ। Therefore, Lord Sri Krishna is the original form of Godhead. भगवान कृष्ण जो है वो ओरिजिनल गॉडेड, मतलब वो ओरिजिनल गॉडेड, वो असली नहीं, हाँ? वो पहले जो है आदि भगवान है। And he is the last word in the transcendence. और वो जो है आध्यात्म की सीढ़ी पे आखिरी शब्द है, उसके बाद और कुछ नहीं। Thus, he is more attractive to the higher transcendentalists who participate in the eternal pastimes of the Lord. तो अध्यात्म में भी अलग अलग लोग होते हैं। जो सबसे ऊंचे आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको विशेष तौर से कृष्ण ही आकर्षक और उनसे ही आकर्षित होते हैं। In forms of the personality of Godhead other than Sri Krishna and Baladev, there is no facility for intimate personal contact as in the transcendental pastimes of the Lord at Brajabhumi. कृष्ण और बलदेव के लीलाओं के अलावा कोई भी अन्य अवतार की लीला अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत ही अंतरंग मित्रता, अंतरंग संबंध बनाने की सुविधा कहीं नहीं है। The transcendental pastimes of Lord Sri Krishna are not newly accepted as argued by some less intelligent persons. भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं जो है कोई नया कहानी नहीं बनाया गया है, जो आजकल बहुत फैशन चला है ऐसा कुछ बोलने का। His pastimes are eternal and are manifested in due course once in a day of Brahmaji. भगवान की लीलाएं तो शाश्वत हैं और ब्रह्मा के दिन में एक बार जरूर आते हैं। As the sun rises on the eastern horizon at the end of every 24 hours. जैसे कि सूर्य क्षितिज पे हर दिन डूबता है 24-24 घंटे पे, वैसे ही भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यहाँ आके जाते हैं। Translation again. Certainly, since time immemorial, all transcendentalists have been rendering devotional service to Lord Krishna, the personality of Godhead, with great delight because such devotional service is enlivening to the self. जो दिव्यता के रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं, जो दिव्य होने के रास्ते पे जो साधु या जो भी कोई चल रहे हैं, वो लोग भक्ति करते समय बहुत खुश रहते हैं क्योंकि भक्ति जो है व्यक्ति को जीवित कर देती है, मरे को चांद देती है। So two very important lessons are being given to us this morning in this verse. तो बड़े उपदेश यहाँ दिए जा रहे हैं, सुबह यहाँ बताए जा रहे हैं यहाँ पे। One is that the activity of bhakti, what scholars refer to as the bhakti cult, did not only begin 500 years ago. जो पंडित लोग, जो तथाकथित पंडित लोग जो कहते हैं, एक्चुअली वास्तव मूर्ख लोग, मतलब Yeah, actually. तथाकथित पंडित लोग कहते हैं कि भक्ति मार्ग जो है 500 साल पहले चालू हुआ, लेकिन वो बुड़बक लोग हैं। Yes, people who are less intelligent, people who are less knowledgeable, but who claim to be very highly educated, they have all kinds of theories, most of them indicating that this belief in Sri Krishna and this activity of bhakti devotional service is a newly invented thing. ये जो लोग तथाकथित पंडित लोग हैं, जो अपने आप को पंडित मान लेते हैं, मानने से कोई पंडित नहीं हो जाता अपने आप से, लेकिन जो मान लेते हैं वो लोग कहते हैं कि भक्ति का जो
संप्रदाय है, बस 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु इस लोग से चालू हुआ। Maya Paripagyana. Their knowledge is stolen by illusion, Krishna describes in the Bhagavad Gita. माया ने उनका ज्ञान को चुरा लिया है, अपहरित हड़प लिया है। So it means that actually this knowledge of devotional service, of pure devotional service, has been for a long, long time actually concealed and hidden in the Vedic literatures. ये जो भक्ति का जो ज्ञान है, ये वैदिक शास्त्रों में छिपा हुआ था। कितने दिनों से? बहुत बहुत सालों से। इसका मतलब यही है, अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि 500 साल पहले नहीं था, इसका मतलब कुछ छिपा हुआ। Just like gold or rubies or diamonds are hidden in the soil. जिस तरह से कभी-कभी घर में सोना छिपा देते हैं घड़ा में डाल के नीचे, जमीन के नीचे, वैसे भक्ति को छिपा दिया जाता है। Because bhakti is the greatest of all jewels. भक्ति से बड़ा सोना तो कुछ नहीं। And therefore, it was the special contribution, actually, of the followers, the immediate followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Goswamis of Vrindavan, to excavate these wonderful jewels of bhakti. गोस्वामी लोग जो वृंदावन में थे, 6 गोस्वामी, उन लोगों ने क्या सेवा किया? ये जो गड़ा हुआ सोना है भक्ति का। Yes. So this chanting of the holy name and this practice of bhakti devotional service has always existed. It is an eternal mantra and an eternal process that has existed since time immemorial. भक्ति का मंत्र, भक्ति का सेवा, भक्ति का तरीका, तौर तरीका, ये हमेशा से था और उसके पहले भी था, हमेशा से ये रह रहा है। So this is being explained here that since time immemorial, great sages have been practicing this process of devotional service. टाइम मेमोरियल का मतलब है आदिकाल से, आदिकाल से, शुरुआत से, तब से ये भक्ति का जो तरीका है, इसको लोग पालन करने वाले लोग रहे। So that means that actually this is the standard, natural, normal process by which one can actually reconnect with Krishna. इसका मतलब है ये प्रामाणिक स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड है, जिससे कि जो बहुत सारे लोग जो है कृष्ण तक पहुंचे इसको करके। Yeah, that means that this knowledge of Krishna, this knowledge of what is called Godhead, Prabhupada explains, just like you may have so many offices, but there is a head office somewhere, some head office. So there is many gods, but there is one head god. That head god is Krishna. तो स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है, पिछले लाइन में था। और ये कह रहे हैं कि बहुत सारे भगवान हो सकते हैं, लेकिन जैसे एक हेड ऑफिस होता है, तो हेड ऑफिस जो मेन भगवान है वो कृष्ण है। Yes. So that is the first important point being made in this verse, that anyone who is coming in contact with this standard process and standard knowledge is immensely fortunate. कोई भी इस भक्ति के तरीके में, भक्ति के रास्ते में आ जाता है, तो उसके भाग्य की क्या सीमाएं हैं। And the second point, which is also most important, it is explaining the reason why it is like that. The reason why this sadhus, since time immemorial, have been attracted is because it is only this activity or process of bhakti devotional service which actually gives full enlightenment and full ecstasy to the living entity. बहुत इतने सदियों से, सनातन काल से लोग इसलिए भक्ति को कर रहे हैं कि भक्ति ही एक ऐसा तरीका है कि ये करने से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। It is only this process that
fully enlivens the living entity. यही एक तरीका जिससे जीव जो है पूर्ण रूप से चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है. Yeah. One of the three tattvas nicely explained by Srila Bhaktivinoda Thakur in the Dasamula Tattva is that Krishna, he is Rasa Samudra. भक्ति विनोद ठाकुर एक पुस्तक लिखे हैं 10 मूल तत्व, उसमें से 3 तत्व जो उन्होंने व्याख्या दिया है उसमें से एक चीज बता रहे हैं कि कृष्ण जो है रस के समुद्र है. What are the three tattvas described by Srila Bhaktivinoda Thakur regarding Krishna? वो 3 चीज क्या है बताने वाले महाराज. Number one, he is the Param Tattva. पहला है कि वो परम तत्व है. Yes. Secondly, he is this he is the source of all Shakti. वो सारी शक्तियों का स्रोत है. दूसरा पॉइंट है. And the third is he is Rasa Samudra. तीसरा पॉइंट है कि वो रस के समुद्र है. He is an unlimited ocean of transcendental pleasures and ecstasy. कृष्ण जो है एक बड़े अनंत समुद्र हैं जिसमें कि आनंद की कोई सीमा ही नहीं. Yeah. So that's why Prabhupada explains nicely in the purport that of all the different incarnations, other than Krishna and Balaram, only this incarnation of Krishna and Balaram, who appeared in Vrindavan Dham, are giving so much of pleasure and satisfaction and attracting, so attractive. इतने सारे अवतार हैं, इसमें कृष्ण बलराम ही हैं जो इतना सारा आनंद दे रहे हैं और इतने आकर्षक. And that is why the devotees are especially attracted to the pastimes of the Lord, Vrindavan pastimes. इसलिए भक्त लोग विशेष तौर से वृंदावन लीलाओं से ज्यादा आकर्षित रहते It is only in Vrindavan that one can actually see and experience. And by seeing and experiencing all of these 5 primary pastimes of the Lord, then this awakens awakens one's dormant original consciousness. Yeah. वृंदावन की लीलाओं को सुन के ही हमारी जो सुप्त चेतना है उसको हम जगा सकते हैं. Yeah. So this whole topic of rasa is like very special and very exclusive to the Vaishnav Sampradaya. जो रस का जो बात है, रस का बात है मतलब ये जो आनंद का बात है उसमें खास करके विशेष तो रस की जो चर्चा है ये वैष्णवों का ही अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है. Mayavad Sampradaya have no access to this rasa, level of rasa. मायावादी संप्रदाय के लोगों का इस रस में कोई प्रवेश नहीं है, बाकी को तो छोड़ दीजिए. And those who are not even transcendentalists, means the grossly materialistic persons, they are caught up in what is called material rasa. They cannot get away from rasa. भौतिकवादी लोगों का तो कहना ही नहीं है, वो लोग भौतिक रस में ही डूबे हुए हैं. Yeah, there is material rasa and then there is spiritual rasa. भौतिक रस और आध्यात्मिक रस दो तरह के रस. Material rasa brings us to a dead end. भौतिक रस हमको एक डेड एंड, एक अंधे कुएं की तरफ ले जाता है. The more we engage in material rasa, the more we increase our suffering in the material world. जितना भौतिक रस में डूबेंगे उतना ही भौतिक दुख के सागर में डूबेंगे. But foolish people are thinking that the more I engage in sense gratification, the more I'll be happy. The opposite is true. मूर्ख को लगता है कि जितना मैं इसमें डूबूंगा उतना सुख प्राप्त करूंगा. So therefore, bhakti rasa amrita sindhu, nectar of devotion, unlimited ocean of transcendental happiness. भक्ति जो है एक अमृत रस की सिंधु है जिसमें कि कोई सीमा ही नहीं. Yeah. Prabhupada was commenting how in the West, he was meeting, I think, one priest, someone from either
one priest or clergy person, and that priest was telling, I don't know what happened. These boys are our boys. Before they had no interest whatsoever. They would never come to the church. And now they have become mad after God. एक प्रभुपाद जी को एक चर्च का एक पादरी मिला था, एक प्रिस्ट मिला था, जो पुजारी होता है क्रिश्चियन लोग का। तो वो प्रभुपाद को बोल रहा था कि ये तो हमारे बच्चे जो आपके पास आए हैं, हमारे पास इसका चेहरा सबका उतरा हुआ रहता था, आपके पास आए तो देख रहे सब खिला हुआ नाच रहा गा रहा सब। What did you do to them? तो क्या किया? What are you giving them? आप क्या दे रहे हैं इन लोगों को? Yeah. Prabhupada one time was also explaining that it is amazing. I'm an old man. I came to your country penniless, no money. And just I'm speaking something, and so many of you have given up. You're all coming from wealthy background, wealthy family, given up everything. And it must be some kind of hypnotism. I must have hypnotized you. It's like I have hypnotized you. आप लोग एक बूढ़े के पीछे लग गए हो। एक बूढ़ा भारत से आया, आप लोगों को कुछ बोला, दिमाग धो दिया, और तुम लोग सब इतना सारा अमीर अमीर परिवार से सब मेरे पीछे लग गया। लगता है हम कुछ जादू टोना किए। So Prabhupada was also explaining how, giving the example of the Pandavas, that the Pandavas, they were banned to the forest for, was it 13 years? 12 plus 1. That's 13. So they were banned for but that's a good point. They were banned for 12 plus 1. And they, their wife, Draupadi, was insulted in the public assembly. पांडवों को 13 साल के लिए जंगल भेजा गया, 12 और 1 साल, और उसके बाद उनकी पत्नी द्रौपदी को भी भरी सभा में निर्लज लोगों ने उनको अपमान किया। And yet, although all these things happened to them, they continued, not only they continued to serve Krishna and to be faithful to Krishna, but actually their love for Krishna increased. ऐसी स्थिति में उनका प्रेम तो घटना चाहिए था, लेकिन घटने के बजाय उनका कृष्ण से जो प्रेम था बढ़ गया। Similar things that happens to non-devotees, the opposite happens. So this is the mysterious aspect of bhakti devotional service. भक्ति का एक बड़ा जादुई पहलू है। Whatever may happen to a devotee, because he understands about this science of devotional service, it becomes a stepping stone to actually increase his service and his devotion to Krishna. भक्त को पता है कि भक्ति और दुनिया कैसी है, भौतिक स्वभाव कैसे, दुनिया कैसी, भक्त तो जब उसको कठिनाइयाँ आती हैं तो कठिनाइयाँ उसके लिए एक सीढ़ी बन जाती है भक्ति में और ऊपर जाने के लिए। And this is actually what Queen Kunti, in her wonderful prayers in the Bhagavatam, she was praying to the Lord that, my dear Lord, now you're leaving us. You're returning to Dwarka. So you will not be here. So therefore, I pray that let these calamities that we have gone through happen again and again, so that by these calamities we can always be remembering your lotus feet and taking shelter of you. कुंती महारानी कहती है कि आप अब नहीं रहिएगा, अब जा रहे हैं, हम भगवान कृष्ण लौट के जा रहे थे द्वारका, तो कह रही कि आप अब चले जाइएगा, आप यहाँ आए क्योंकि हम लोग तकलीफ में थे, अब आप चले जाइएगा। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कठिनाई, मुश्किल और झमेला हमारे जीवन में बना रहे,
जिससे कि आप हम मदद करने के लिए यहीं बैठे हैं। No materialistic person in his right mind will be asking for calamities to come. कोई भौतिकवादी व्यक्ति दुनिया में कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करेगा कि मेरे भैया तकलीफ दो। Only someone who's a devotee. इसका सही दिमाग वो तो नहीं करेगा, केवल भक्त है जो ऐसा प्रार्थना कर सकता है। So a devotee is always ever satisfied regardless of what may be taking place. तो भक्त जो है हमेशा संतुष्ट होता है चाहे जो भी हो जाए उसके लिए। Because he's fully surrendered unto the Supreme Lord, and he knows that nothing happens without the sanction of the Lord. भक्त भगवान की पूर्ण शरणागति में रहता है, और दूसरी बात है कि वो जानता है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, जो हो रहा है तो उनकी इच्छा है। So therefore, only one who develops this kind of consciousness can actually become completely fearless in this otherwise fearful material world. यही चेतना है जिसमें व्यक्ति जो है वो डर से मुक्त होकर जी सकता है, नहीं तो भौतिक जगत में दुनिया में हर कोई डरा हुआ है। So it is this process and this knowledge of bhakti, devotional service, that we are all fortunate to receive by the mercy of Srila Prabhupada. ये जो हम लोग यहाँ भक्ति प्राप्त किए हैं, ये प्रभुपाद जी के परम कृपा से प्राप्त हुआ है। And therefore, the more we can appreciate and understand this rare gift of bhakti, devotional service, then we will want to share it and give it to as many people as possible. इसलिए जितना इसको समझते हैं, इस जितना इसको अप्रिशिएट, जितना इसको सराहना करते हैं, उतना ही ये जो हमको जो मिला है उसको हम दुनिया को सबको दे पाएंगे। So let us remember these two important points being mentioned here. Bhakti is, that's why we have the term Sanatan Dharma. It is an eternal process. इसलिए हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म, जो हमेशा रहता है, सनातन धर्म। Yes, and it is unlimited because Krishna is unlimited. It means that we have for the whole of eternity to deepen our understanding, deepen our relationship with Krishna. मतलब कृष्ण से संबंध बनाने के लिए पूरा सनातन समय पड़ा हुआ है। So any comments or questions on this? कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है? या प्रश्न? सिद्धेश? Yeah, I always expect at least one question from him. महागुण? In starting, in bhakti process, in starting we are excited a lot and we do services with lot of excitement. But later on, as the time passes, our excitement gets little bit less. So how to get that excitement again back and start doing services with more excitement, and that is my question. Yes. Translation. शुरुआत में भक्ति में बहुत आनंद आया, समय के साथ वो आनंद चला गया, वो आनंद कैसे फिर आ जाए ये बता दीजिए। It is true that generally when we in the beginning join as devotees, because it's all very new, especially prasadam, we experience a lot of ananda. शुरुआत में सब कुछ नया था, प्रसाद था। But I think that enthusiasm for prasadam continues no matter what. प्रसादम का तो चीज रह ही जाता है, वो बदलता नहीं। So, but very often, yes, the initial excitement or enthusiasm of a new devotee after some months or some years will wane somewhat. वो उत्साह तो उतरता ही है समय के साथ।
So generally that is because we are not properly applying the process, and now that we have, when we come to Krishna consciousness, we become situated in knowledge. We learn so many things. And before we came, we didn't know anything. But after coming, even a short time, we learned so many things. But if we continue to make offenses or mistakes or commit sinful activities, then that slows down our progress. तो हम जब भक्ति में आते हैं और चलते रहते हैं, तो जैसे धीरे धीरे समय पार होता है, तो समय पार होने से क्या होता है कि हम कुछ अपराध करने लगते हैं, और इसलिए हमारा स्पीड जो है कम हो जाता है. Yes. So the only drawback, the only thing that is preventing us continuing to experience this transcendental bliss, because Krishna confirms in the Bhagavad Gita, Susukam Kartama Vyayam, it is very happily performed, are different offenses. That's why we recite every day the 10 offenses, but we need to not only recite them, but actually meditate and follow those instructions. भगवान कृष्ण कहते हैं सुसुखम कर्तुम सुसुख होना चाहिए करते समय. अगर नहीं हो रहा है इसका अपराध हो रहा है, तो अपराध हो रहा है तो हम लोग खाली सोच रोज पढ़ते हैं कि 10 अपराध, लेकिन उससे अच्छा है उसको मेडिटेट कर, उसको ध्यान करके उसको थोड़ा सोचना चाहिए गहराई से कि क्या है अपराध. So those who are actually very serious in nicely applying and following the instructions, they will be able to not only maintain, but actually increase more and more their enthusiasm in devotional service. तो इस तरह से जो अलर्ट रहेंगे, वो अपना जो उत्साह है भक्ति का, वो बनाए रख पाएंगे. Yeah. Prabhupada was, of course, that prime example for all of us. He would be explaining that Krishna consciousness is something that is ever and ever fresh and new. That we can experience. So that is not possible without the special mercy of Krishna also. How do we attract that mercy of Krishna? By Krishna seeing that we are making those efforts. जब हम प्रयास करते हैं तो कृष्ण देखते हैं कि इस बहुत मेहनत कर रहा है, तो भगवान कृपालु हो जाते हैं. ये यथम मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्. I reciprocate with my devotees according to how they endeavor to serve. अपने भक्तों को वैसे ही, जैसे भक्त आता है वैसे मैं भी उनके साथ आता हूँ. ये यथा मम प्रपद्यन्ते. Yeah. So that's why Prabhupada also used to emphasize reading, especially not only in the beginning, but such books as the Nectar of Instruction, and there are two nectar books, Nectar of Instruction and the Nectar of Devotion. प्रभुपाद जी ने पढ़ने के लिए कहा, खास करके जो दो पुस्तक हैं, Nectar of Instruction और Nectar of Devotion. Yeah, such fundamental and very deep, essential instructions given by Srila Rupa Goswami. When we keep those instructions in mind, when we have those in our heart, then we can continue to progress and actually experience that bliss or happiness and satisfaction in bhakti. जब हम इन उपदेशों पे मेडिटेट करते हैं, अपनाते हैं, तो हम हमेशा के लिए खुश रहते हैं. Yeah, and feel ecstasy not only in taking prasadam but in cleaning the toilets. केवल प्रसाद खाने में मजा नहीं आएगा, टॉयलेट क्लीन करने में मजा आएगा. Or cleaning anything. All service, one understands, all service is bhakti, devotional service, transcendental, pleasing to Krishna. सब भक्ति है, सब भगवान को प्रसन्न करने वाला. Seems like someone has brought a plate here to enliven everyone. Just by seeing that plate, everyone. Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Srila Prabhupada ki Gaur Pimanande Jai Bhakti Raghu Swami Maharaj ki Jai Mahaprasadam ki Jai